Okay, so from today, we are going to start with the LWC sessions. Okay, and let's start with the first basic concepts. Okay, about JavaScript. Okay, I have already, I think I have covered some of them in for a lecture, right? What is where, let, const. Okay, what is the difference between new and undefined? Okay, so we are going to repeat. Okay, so that because we are going to use this in our this LWC code, so you must be aware about this things, right? Basic JavaScript codes. Okay, so these are nothing but okay functions, variables, okay, properties, different properties, array, collection, okay, collection syntax, okay, destructuring of arrays. Okay, so this we are going to see one by one. Okay, so let's first start with the difference. What is null, what is undefined? Okay, so JavaScript, okay, very good. Yeah, so we can start with this one. Okay, so by default, the value of any JavaScript variable is undefined. Okay, null is not the default value. Okay, let me show you the example. Inspect element. Okay, console, and I have cleared that. Okay, now let's say I am defining one variable. Okay, or let's start with the variable first. After that, we will go with the this null and undefined. Okay, so in JavaScript, we have three kinds of a variable, that is where, let, const. Okay, so let me first define one. Let's say where variable I have defined. Okay, and I have, you can see I have defined one variable and I haven't initialized that with any value. Okay, and now let's say I want to access that particular variable. Okay, so I'm accessing name, enter. Here you can see it is giving me blank. Okay, so by default its value is undefined. You can see it is printed over here. Okay, it is undefined. Let's say I want to assign some value to it. Okay, so like this. Okay, and we are going to try to access that. This way we will get the value. Okay, so then what is let? Okay, then what is let? We have a where, then why are we are going to use let? Okay, so basically where is a global scope variable, let is a local scope variable. Okay, scope variable you can say. Also constant is also a scope variable. Let me check if I can show you one demo instead of this. JS. Okay, let's add one button here. Okay, simple button I am adding. Complex, click here. Okay, and here on click event we are going to add. Okay, on click of on. Is someone on unmute? Please mute yourself. Hello. Hemant, can you mute yourself? Okay, so you can see I have defined one display method. Okay, let's define that method here. Okay, function display method. This is a basic JavaScript method how we define. Okay, so now let's define one variable name and
let's print that value alert alert. Okay, simple. If I run here, okay, you can see one button is added over here. Okay, click here. Whenever I click on this button, okay, this is going to call display method, which I have defined here. Okay, this is a basic JavaScript, nowhere related with the LWC, but this you should know. Okay, so display method will be called, and inside this I have defined one variable that is name. Okay, so when I am going to print this value, let's see what happens. Okay, let's run again. You can see no value is getting printed because we haven't assigned that value, right? So now let's assign the value here. Let's say any city name, we can enter run. Okay, why it is not showing? Yeah. Let me put this in console log. Okay, city name we are going to print here. Let me open the console log. Now I click on run. Click on this. You can see city name is Pune. Okay, so this is I have defined a simple variable, right? Okay, right. If I call another function from here, okay, let's say I have defined if, okay, if city name is equal to Pune, okay, is going to enter inside my if. Okay, and here what I am doing is I am defining one another variable, okay, that is city name. I'm changing it to Mumbai. Okay, and I am going to try to print this value. Now let's see what value this prints. Okay, okay, let's run. You can see if you check the code here, okay, if you check the code here properly, yeah. Now if you see inside display method, we have already defined one variable that is city name. Okay, inside this we have assigned Pune as the value to city name. Okay, which we have displayed here in the log, right? Which is printing or displaying correctly, right? But now we have added one more condition here, that is city name equal to Pune. If city name is equals to Pune, which is correct, okay, inside that we are adding another variable and the name is same, that is city name. मतलब दोनों का variable name मैंने same ही रखा है, data type इसका var ही है, right? But I am assigning new value to it. Okay, अगर अब मैं बाहर प्रिंट कर रहा हूँ इस if के I am printing that value outside this if scope, still I am getting the value as Mumbai, but it should refer to this value actually, because this is a local variable, right? Inside if this should be a local variable, it shouldn't be available outside this scope, this if scope, right? So this is the con that var variables are having. Means whenever you are trying to assign or define a var variable with the same name, it is going to override your existing variable which was previously declared. Okay, so this is a disadvantage. So for that reason we are using let. Okay, so now let's see the same example with the let keyword. Okay, let me comment this. Now I'm changing it to let. Now you will see the difference. Okay, if I click on run, okay, click here. Now you can see both the value. Let me print another log here.
what we will enter here inside it. Okay, run. Now you can see first is first log we are getting as city name as Pune, right? That is correct. Okay, after that we are checking whether the city name is Pune or not. If it is Pune, then it is going to, the flow is going to go here. Okay, and again we are declaring one new variable with the same name, that is city name. Okay, and we have printed that, which is printing correctly, that is Mumbai, right? But now the control goes back to this method. Okay, outside the if scope. Okay, it is now outside the if scope. Okay, now this city name will going to refer the this variable. Okay, not this one. So if you declare any let variable inside any if or any block, the scope will be available until that block ends. Okay, means you can access this let variable, that let a local variable inside only this. Outside this it is not accessible. Okay, let's say I am not defining any variable here. Okay, and I am still try to print this value city name. Okay, let's see what happens now. Okay, now you can see reference error, city name is not defined. Okay, because this value is not available outside the if. But let's say I change this to this. Okay, now see, now you can see it's printing undefined, but it is not throwing you any error. Okay, so that's how this works actually. Okay, so whenever you are declaring any variables, okay, inside any method or function, always use let. Okay, don't try to use please try to avoid using where whenever you are dealing with JavaScript. Okay, okay, this is let. Now let's remove this all of things. Now let's say I have declared city name. Okay, I have printed that, and I'm reassigning any value to it. Okay, I'm reassigning any some other value. Okay, let's say Delhi I have added. Run. Okay, click here. Okay, it is perfectly working fine. Okay, city name is first of all Pune was assigned, so Pune is printed. I have reassigned new value to that variable. It is printing this updated value, right? Correct. Now let's say you want to declare if you have attended Apex classes, you know we can't reassign any value to a final variable, right? It is only assigned one time. Okay, so you can't change that. That's why its name is final. Now in JavaScript, to achieve the same thing, you can use const variable. Okay, let's say I have added this const. Okay, you can see the I don't need to run this as code actually. It is already showing me error. You can see if I hover over it, a message is displayed attempting to overwrite city name, which is a constant. Okay, it is itself is giving the error. Okay, now let's try to run. Okay, you can see one error is there. Okay, this one is printed successfully, but when you try to reassign any value to this constant variable, that time you will get one error, that is assignment to constant variable. Okay, means you can't assign any new value to a constant variable. Okay, so these are the purposes of this different this variables in JavaScript. Okay, so I will, let's check one difference. Let me go through that. Yeah, this one will work for us. Okay, yeah, you can see this is a very good chart. Okay, so this is a where, this is a let, this is a const. Okay, so where is always a global scope area. Okay, you can access within the function, outside the function. Okay, anywhere you can access that. Okay,
but that's the not the case with let and const. Okay, let and const should be are these are nothing but the block scope variables. Okay, you can see block scope, these are ticked here. So means outside the scope you can't access these variables. Okay, so these are preferred whenever you write this variable inside any method. Okay, function scope means these are both every type of this variable is accessible inside a function. Okay, so that's why it is function scope. Can be reassigned. I have already given the demo. You can reassign values to var variable, reassign value to let, but not for const, because const are constant variables are a type of final variable. You can say you can't reassign any value. That's why they are declared as constant, the value that shouldn't be changed over a period of time. That's why these are constant. Okay, after that we have can be hoisted, sorry, can be redeclared. Okay, so we have already seen the example of this where I have declared one city, right? Already where city. Let me uncomment this. Okay, I have declared that variable already here. Okay, city name. Still I am reassigning or redeclaring that value with the same name. Okay, so that is possible with the var. You can redeclare this variable with the same name. But if you are try to do the same with let me try with the let. Okay, and I am going to let me comment this. Okay, and let me try to redeclare that variable. And now here, let's say Gujarat. Okay, okay, you can see it's not allowing me to redeclare this variable with the same name. If I hover over this, you can see city name has already been declared. Okay, so let variable doesn't allow you to redeclare a variable with the same name. Okay, but if I change this to where, okay, let's say I'm changing this to where, you can see the error is gone. Okay, so this way it will confuse the developer. Okay, this variable is already declared or not. Okay, so please avoid using var variables whenever you are going to work on aura or lwc. Okay, so always go for let. Okay, that is very useful. Okay, and now you can see if I redeclare that same variable inside any block scope, it will not going to throw me any error. Why? Because it is block scope, means this is available to this scope. Okay, outside this it is not available. So if inside this I am going to access this variable, this is going to go for this, not for this. If I have commented this, then it will first search for this scope whether any variable declared with this city name inside this if scope. If it is there, it is going to reference that. Okay, otherwise it is going to check outside this scope. So outside scope is city name. Okay, so that will it is going to refer. Okay, simple. So now can be hoisted. Okay, so hoisted topic we are going to see in our later lectures. Okay, I will show you. Otherwise all of these points we have covered. Okay, so these are just nothing but the basics of JavaScript. Okay, so now let's talk about the difference between null and undefined. Okay, so you can see it is the intentional absence of the value. Means by default if you manually assign a variable a null value, that time it is going to, means it is an indication that the value that the variable doesn't have any value. Okay, let's say I have defined pin code and I am assigning null. Let's say I haven't assigned anything, pin code. Okay, it is going to return me pin code, sorry, undefined. Okay, by default I haven't added any value, it is going to give output as undefined. If I added something here, let's say I have added something. Okay, in JavaScript you don't need to declare a different kind of data types, like for string, decimal, float. Okay, but all of this same we have to use the same variable name, like either var, either let, either const. Sir, Yes,
Hello. Your voice is cracking a bit. Hello. It is also audible now. Yes, sir. Yeah. Okay. Okay. So now you can see I have defined one variable here given any value. And now if you are trying to print here in code, it's going to return me correct value. Okay. But let's say I don't want to use this value anymore. So I want to empty that value. Okay. So I can use null in that case. Now if I going to print that value, it is going to return me null. Okay. Simple. Now it is one of the primitive type value. Okay, null is of primitive type value. Okay, what are primitive types? Okay, in if you have primitive data type, if you have gone through apex, we have string, decimal. Okay, all of these are primitive data type, etc. Undefined, it means the value does not exist in the compiler. It means it is empty. Okay, basically. Now if you check here, okay, let's define two variable. Okay, name one, name two. Okay, in name 2 I have defined null. Okay, and in name 1 it is undefined. Now let's try to compare those. Okay, name 1 equal to name 2, it is giving us true. Okay, why? Because both are empty, that's why. But what is the difference between this equal to and strict equal to? Okay, it is known as comparison operator. Okay, it is known as strict comparison operator. Okay, so if I am going to use strict comparison operator, that time it is going to return me false. Why? Because both of the data types are different. Null is an object, and this one, what? Second one is what? Null. Null is an object. What? Hello? Undefined. I am not getting it. What you're trying to say? Okay. Okay. So this way we are getting that. Okay. Now you can see here. Okay. If we are going to add any number to this, okay, let's say you can see this example. This nn is what? Not a number. Okay, if you are going to use concatenate, you can see, let me define one another. Okay, let's say school name. Okay, school name, and I have given here, that is, let's say any school name, global school. Okay, let's say this is one school of type string variable, and I am trying to add school name plus no. You can see, okay, it is not defined. Okay, let me go here. Let me go here, and how you can access that number dot is nan. Okay, this is this is going to return us whether the given variable value is a number or not. Okay, so let's say I am going to enter here school name. Okay, enter. Why it is not defining here? Let me check. Number dot is not a number. Okay, inside this, let's say school name. Now you can see it is returning me false. Okay, why? Because I am giving string here, and it is checking whether the given string is not a number. Okay, that's why. Okay, you can see here example. Let's go with the example. Okay, practically we are going to see that later. Okay, so now if you see here, okay, by default value is undefined. Okay, we have checked here strictly. Okay, whether temp is strictly equal to undefined. Yes, it is true. It is going to return us true. Okay,
Now let's say you are defining one list of elements here. Okay, A, B, C. How you define your list in your this Apex? Similarly, we can define list or array like this in JavaScript. Okay, square bracket and inside that your elements. Okay, all the elements. So now here we are checking that temp3 is equal to undefined. It is giving us true. Why? Because in array we start the index with 0, right? 0 1 2, and the third index is not exist. Okay, that's why the value will be undefined. Okay, now these are some differences. Okay, so these are theoretical purpose. I will share one link with you all. Okay, so wherein you will check all this detail. Okay, and practice some basics example. Okay, that is not that hard. Okay, yeah, you can see. Let's go here one by one. Okay, now one variable is declared here, that is greater. Okay, and I am defining one new function. Inside that I am declaring hello. Okay, now here greater is globally scope. Okay, why it is globally scope? Because it is declared outside this function. Whichever variable declared outside a function, that are known as globally scope variable. Okay, and those function or those variables which are defined inside any method or a block, that are known as local scope variable. Okay, simple concept. Okay, so this is a global scope variable, this is a local scope variable. Okay, now if you check here, okay, if you print hello here, hello is not defined. Why? Because you are trying to access the variable outside the scope. Okay, and outside the scope we haven't declared that hello here anywhere. Okay, so this hello will be accessible inside this function only. Okay, now here this example we have already seen, right? So if you are using where as a data type for a variable, okay, you can redeclare the variable with the same name. Okay, and also you can assign any values, reassign any value to that particular variable. Like here, first variable we have defined hey hi, after that we have reassigned any value to this. Okay, so simply it is going to override this value. Okay, now the hosting part. Okay, so that's we have left with. Now hosting means what? Means whenever you try to access any variable which is not declared yet, and you are declaring that variable after displaying that in that log. You can see here I have printed that greater here in Apex. If you see, whenever you're trying to use any variable like this, okay, if I go to notepad, let's say I have defined one function. Okay, void and display name. Now inside this, okay, inside this, if I am debugging like this, system.debug, okay, and here I have let's say name. Okay, I'm displaying name. Now what will happen if I going to call this method from debug developer console? Can anyone answer? Undefined. Correct, yeah, it is going to throw you error that the name variable is undefined, it is not defined. Okay, now if you are declaring that variable like this, okay, let's say string name and assign some value to it. Okay, assign some value. Now if I call this method, what should be the result? If I call this method from developer console, what should be the result? एरर ही आएगा ना सर, वो बाद में हमने डिक्लेयर किया था. हाँ करेक्ट. सो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं क्या एरर आएगा. करेक्ट है, एरर आएगा. ओके, लेट्स गो टू लॉगिन org. Let's open developer console. Okay, now what we will do, okay,
So here, let me define quickly one class. Okay, demo class basics. Okay, I have defined one class. I am declaring one method here. Let's use the same. Okay, and now save this. Okay, copy this. Now you can see itself the code is also not compiling here. Okay, forget about calling that method. The code it is not even compiling. Okay, now let's see what is there. Variable does not exist. Okay, it means in Apex, whenever you want to use any variable, it should be declared first. Okay, it should be defined. Otherwise, you're not going to able to access that variable. But in JavaScript, it is different. Okay, let's try about the JavaScript. Okay, so let's try this example. Okay, now let me go to inspect element, console, and I'm writing one function here. Okay, function display name, display what greeting. Let's say display greeting. Okay, I am defining that code. Okay, whole code I am printing here. Okay, let me add here greeting. Okay, and now enter. Okay, so I have defined that one method. Now let's call this method display greeting. Okay, so if you see here, it is not giving me error. Okay, if you see this, it is not giving me error that the variable is not defined. It is just displaying a value as undefined. Okay, if it is means what it is saying that let me It get compiles. yeah, it will compile, but it treat means in the backend what code it will compile, that I will show you now. Okay, in the backend, let me write here itself. Okay, so in the backend it will convert your code like okay, it will convert your code like this. Okay, greeting will be defined here. Okay, and this will be removed. Okay, now let's change the value that let's change the method name. Okay, now if I return my method like this, okay, in JavaScript whenever it is get compiled, okay, it will convert your code like this. Okay, so this is known as the hosting. Okay, whenever you have declared your variables, after you have defined any logs or any statement above that, it is going to move your variable to the topmost position. Okay, like this. Now if I am trying to access this function, let's see what is the output. Okay, so let's call display greeting 2. Okay, you will get the same output. Okay, why we are not getting any value here? Because we haven't assigned any value yet, right? But if I try to print, okay, let me define as third. If I try to print this value like this, console log dot, and here greater. Now it is going to print that value. Okay, greater. Okay, let's save this. Now let's call that value display. Now you can see say hello. Okay, so this is known as the hosting part. Okay, so in JavaScript your code will be converted like this. Okay, so this is known as hosting. Okay, okay, now you can see here they have already given one example here. Okay, I should have shown you this slide. Okay, they have first defined one log. After that they have defined the variable and assigned some value, but it is interpreted at the back end like this. It will move your variable to topmost position and it is going to print like this, and now it will assign your new value like this. Okay, so in backend your code will be changes, code structure will be changed. Okay, so now what are the problems with the where keyword? Okay, why shouldn't we use where? Okay, so now here you can see greeter they have assigned,
where times equal to 4, and here you can see they have added one condition. Whenever the time is greater than 3, times is greater than 3, it should be executed. And here also we are defining the same variable and assigning new value to this. Okay, but whenever we are going to print that or display that value outside that if scope, it is still going to print the overridden value. Okay, but it should be accessible within this scope actually. Okay, but this is one weakness. We have already seen that the city example, we have defined city as Mumbai, still it is printing that city. Okay, Mumbai, you can see this is the example that I was talking about. Okay, so you have understood, right? This means whenever you declare a variable with the same name, okay, and you are assigning any new value to that, so it is going to display that final value which is assigned to that variable. Okay, simple. Now let's say let. So let is very improved over this var declaration, and I have already told you that let is a block scope variable, means it will be accessible within the block. Outside the block it will be not going to accessible. You can see this example. Okay, so they have defined greeting, they have defined times, the condition is true, and they have defined one local scope variable hello, and they have assigned some value to that, and they have printed that here. So when we run the code, it is going to print or display say hello, okay, which is assigned here, which is correct. But whenever you try to assign that value outside this block scope, it is not going to show you the value because hello is not defined here outside this if. Okay, if it is declared outside the if, then it will take that value. Okay, simple. You can see, we can see that hello outside its block, the curly braces where it was defined returns an error. This is because let variable are block scope. Okay, this is the reason. Now let can be updated but not redeclare. So what is the difference between update and redeclare? Update means you are reassigning new value, but redeclare means you are defining the whole variable, means as it is the same to same your name you are create like this. Okay, so this is known as declaration. Okay, this is known as value updation. Okay, so here you can see you are getting the error. What error? Greeting has already been declared, so with let it is not possible to redeclare a value with the same name. Okay, redeclare a variable with the same. Okay, now here however if the same variable is defined in different scope, no error will be there. Why no error will be there? Because let's say let, okay, say hi is the first value, it will go inside if. So this is a block scope variable. Okay, it will be accessible inside this. Okay, so they have printed it correctly. Now if I am accessing that value outside the scope, it is not going to refer this one. Okay, because it's a block scope, it is not going to accessible. But we have defined another variable here on the global scope, that is say hi, so that's why it is going to print that. So this is nothing but the basics. Okay, basics of JavaScript I am talking about. Okay, और सर ये जो सेम अभी एग्जांपल है, इसमें अगर हमें जो ग्लोबल स्कोप वाली मतलब जो बाहर वाली ग्रिटिंग है उसकी वैल्यू अगर प्रिंट करनी हो तो उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। इसको कहाँ पे एक्सेस करना है तुमको? अंदर जो हाँ, कर इफ वाला सकते हैं, ब्लॉक कर है सकते उसमें हैं। ये देखो, तो ये देखो, कैसे? वो ग्लोबल स्कोप है ना। ये देखो मैं बताता हूँ फ्लो कैसा है इसका। एक मिनट, सेम एग्जांपल, लेट्स गो टू पेंट। सो इधर ही बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, दैट्स व्हाई मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये। ओके, ये रहा हमारा कोड। ठीक है, अब लेट्स से ये मैंने मतलब कमेंट किया है, लेट्स से कोड। ठीक है, ये कमेंट किया मान लो कोड, ये डिफाइन ही नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको मैं इधर सर ये समझा सर, अगर ये समझा ना? अगर हम हाँ, अगर मैं सर लोकल स्कोप में कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करता हूँ तो तब फर्स्ट, हम एक्सेस कर सकते हैं, बट हाँ, अगर हम लोकल भी कर रहे हैं तो सेम टाइम पे क्या हम वो जो बाहर वाला ग्रीटिंग है वो भी कर सकते हैं क्या, दोनों नहीं नहीं वैल्यू नहीं एक नहीं साथ? नहीं, सेम टाइम पे नहीं होगा ये। बिकॉज अगर तुमने लोकल स्कोप वेरिएबल दिया है वो भी सेम नेम है ग्लोबल स्कोप के जैसा, सो ये फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देगा, लोकल स्कोप को। अगर ये लोकल स्कोप में तुमने डिफाइन ही नहीं किया तो प्रायोरिटी विल गो टू ग्लोबल स्कोप। ओके, ठीक है सिंपल ऐसा। ठीक है, ओके, सो नाउ सर। होस्टिंग, ये सर एक और बात, हाँ हाँ,
अभी यहाँ पर जो हमने लेट करके दिया था, अभी वैर करके सेम नाम से दे सकते हैं क्या हम ये ग्रीटिंग वाला? ये यहाँ पे अंदर क्या? नहीं नहीं, बाहर ही बाहर ही। हाँ दे सकते हो ना, दे करके सकते हो। कर रहे हो और हाँ वैर करके भी दे रहे हो। यस यस दे सकते हो सिंपल। यहाँ पे अगर और तुम्हें, सर, हाँ सेम है अभी, ये कोड सेम रहेगा। हम्म फर्स्ट स्टेटमेंट ऐड हो जाएगा वैर ग्रीटिंग बोल के। हम्म और उस टाइम पे फिर हम मतलब कैसे फिर डिफरेंशिएट करेगा अगर वैसे अलाउ करेगा तो? अलाउ करेगा मतलब डिफरेंशिएट क्या करना है तुमको? अभी सर सेम कोड है, उसके हम्म अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रहेगा वैर हम्म ग्रीटिंग्स इक्वल टू समथिंग। यस। उसके बाद, उसके बाद हमें प्रिंट करना है बाहर ही, जैसे बाहर कंसोल डॉट लॉग अच्छा जैसे ग्रीटिंग ये किया किया है है। यहाँ, हाँ हाँ हाँ, सेम। हम्म। बस, तो तो यहाँ पर वो कौन सा प्रेफरेंस करेगा, वो वैर वाला ये लेगा या फिर लेट वाला लेगा? ये देखो, ये देखो, पहली बात ये देखो, यहाँ पे मैं एक ये करता हूँ, फंक्शन में लिख के दिखाता हूँ उनको। इंस्पेक्ट, ठीक है, कंसोल लॉग में जाते हैं हम और एक ना मेथड लिख देता हूँ यहाँ पे, फंक्शन डेमो, ठीक है ठीक है। अभी देखो ये सेम टू सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। आउटपुट चेक करते हैं इसका, ठीक है। मैंने कॉल किया डेमो 1, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे लेट इसने डिफाइन किया, से हेलो, अंदर आया, लेट ग्रीटिंग इसने एक वैल्यू असाइन की और यहाँ पे इसने प्रिंट किया। तो ग्रीटिंग कीवर्ड को सर्च करेगा लोकली, यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है क्या उसको? तो यस, वन लोकल स्कोप वेरिएबल इज डिफाइंड विद दैट सेम नेम, दैट इज ग्रीटिंग, ठीक है। तो ये प्रिंट कर दिया उसने, हेलो, से हेलो इंस्टेड, ठीक है। अब ये इस स्कोप के बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या प्रिंट किया, कंसोल डॉट लॉग। अब ये इसके अंदर सर्च करने नहीं जाएगा, ये आउटसाइड द स्कोप सर्च करेगा, क्योंकि ब्लॉक स्कोप का ब्लॉक स्कोप में ही वैल्यू एक्सेसिबल है। तो यहाँ पे ग्रीटिंग प्रिंट किया इसने, से हाय, ठीक है। इट इज क्लियर। अब सेकेंड एग्जाम्पल, अब लेट से मैं यहाँ पे ऐसे डिफाइन करता हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ ऐसा। अब इंस्टेड ऑफ लेट मैं यहाँ पे वेर यूज करता हूँ, तो ये अलाउ नहीं करेगा यहाँ पे वेर, ओके, ये अलाउ नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गिवन द नेम टू लेट वेरिएबल, ओके। अगर मैं ऐसा करता हूँ, एंटर करता हूँ यहाँ पे, ओके, यू कैन सी आइडेंटिफाई ग्रीटिंग हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो सेम टाइम पे तुम एक ही वेरिएबल नेम लेट को भी और वेर को भी असाइन नहीं कर सकते। बट अब थर्ड एग्जांपल, ओके, बट यू कैन यूज सेम वेरिएबल फॉर वेर, ओके। अब मैं यहाँ पे करूंगा तो ये चल हाँ, जाएगा। वो तो रीडिक्लेयर हो जाएगा ना। हाँ ये रीडिक्लेयर हो जाएगा। तो रीडिक्लेरेशन वेर के केस में अलाउड है, बट लेट के केस में नहीं है, ठीक है। तो यही तुमको देखना है, ठीक है। अब मैंने एंटर कर दिया डेमो 2, ठीक है, ये किया मैंने एक्सेस, ठीक है, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये नीचे का जो वैल्यू ग्रीटिंग प्रिंट कर रहा है वो ओवररिडन वाली प्रिंट कर रहा है, ठीक है, सिंपल, ओके। तो यही डिफरेंस है दोनों में कि तुम लेट के साथ डुप्लीकेट वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, बट वेर के साथ कर सकते हो, ठीक और है। सर यहाँ पर वैर और लेट, अगर पहले वैर डिफाइन किया बाद में लेट किया तो फिर मतलब सेम ही एरर देगा क्या? चेक, लेट्स चेक द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करोगे तभी सीखोगे, ठीक है। अब तुम जैसे बोल रहे हो कि यहाँ पे लेट को बाद में करते हैं, वेर को पहले करते हैं, ठीक है, लेट्स डू दैट। स्टिल इट इज नॉट गोइंग टू अलाउ, ओके, क्योंकि कंपाइल होते टाइम क्या, एक लाइन बाय लाइन पूरा कोड कंपाइल होगा तुम्हारा, ठीक है। तो लाइन में इसको दिख जाएगा कि लेट ने भी वही वेरिएबल यूज किया है, वेर ने भी वही यूज किया है, तो इधर के आगे तुम्हारा जाएगा ही नहीं, यहाँ तक ही तुम्हारा कोड कंपाइल हो गया 2 लाइन तक, इसके बाद ही तुमको डायरेक्टली एरर थ्रो कर देगा, ओके। सो अगर तुम पहले वेर करो या बाद में वेर करो, इट इज सेम थिंग, ओके। सो ये ऐसे चलता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा वेर लेट कॉन्स्ट, ओके। कॉन्स्ट का तो एकदम सिंपल है, फाइनल वेरिएबल के जैसे, तुमने एक बार डिक्लेयर कर दिया, यू कांट रीअसाइन दैट, और ब्लॉक स्कोप है, सिंपल, ओके। होस्टिंग का भी मैंने बता दिया ऑलरेडी, राइट, कि अगर जैसे कोई वेरिएबल तुमने ये किया है, मतलब प्रिंट किया है, बट यू हैवंट डिफाइंड दैट, ओके, तो वो इंटरप्रेटेड डिफरेंटली होगा, ठीक है, वो भी बता दिया है मैंने, ठीक है। अब ये शेयर कर दूंगा एक लिंक, तुम पढ़ लेना, ठीक है, एक बार।
अब एक नल और अनडिफाइन के बीच में एक अच्छा डिफरेंस देखता हूँ मैं, कुछ मिला तो check this on this one, let's check. सर एक और क्वेश्चन था, अगर ब्लॉक के अंदर ही अगर हमने var वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो मतलब उसका स्कोप तो ग्लोबल ही रहेगा ना, अगर यस उसकी यस वैल्यू। यस तो यहाँ पर हमने पहले करके देखा था, हम्म बट वहां पर हमने बाहर भी हमने, यहाँ पर नहीं सर, वो वैर वाला बस लेट की जगह पे वैर होगा। हम्म तो ये बाहर हमने उसको पहले डिफाइन नहीं किया है, बस अंदर ही ब्लॉक के अंदर ही किया है, तो उसकी वैल्यू असाइन नहीं, मतलब बाहर हम यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ रुको, एग्जांपल मतलब समझा, मुझे समझ गया बट बाकियों को समझाता हूँ मैं क्या है ये। ओके, लेट्स से यू आर यूजिंग अगेन दिस डेमो। ओके, लेट्स से डेमो 4। ओके, यहाँ पे एक वेर वेरिएबल डिक्लेयर किया है और लेट्स से रिमूव करते हैं इसको। ऐसे ही बोल रही हो ना तुम कि दोनों साइड मैंने वेर किया है? नहीं सर, बाहर बाहर करना ही नहीं है वैर डिक्लेयर। लेट्स से यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया मैंने, और यहाँ पे तुमने वेर डिक्लेयर किया है और तुम इस लोकल स्कोप के बाहर प्रिंट कर रही हो उसको, राइट? अच्छा, ये शायद देखा था हमने एग्जांपल, हाँ, बाहर ये प्रिंट नहीं एग्जांपल, होगा वैल्यू। यस, ये डिफाइन किया था मैंने स्टार्टिंग। ओके, सो ये प्रिंट होगा क्योंकि हम लोग बाहर मतलब बाद में प्रिंट कर रहे हैं ना, असाइन होने के बाद। बट अगर मैं इसके ऊपर प्रिंट करूं, लेट्स से लाइक दिस, ओके, लेट्स से मैंने ऐसे प्रिंट किया 5, यहाँ पे प्रिंट अच्छा किया। सर, मतलब अगर लोकली मतलब हम ब्लॉक के अंदर करें, कहीं पर भी रहे, var जब यूज करेंगे तो वो हाँ, ग्लोबल ही डिक्लेयर यस, होगा। तो वेर को मैंने पहले ही बोला ना कि ग्लोबल स्कोप है, तुम कहीं पे भी डिक्लेयर करो, पूरे कोड में कहीं पे भी अवेलेबल है। ग्लोबल स्कोप का मीनिंग ही वही होता है कि ग्लोबली इट विल बी अवेलेबल। सर बट एक लोकल, जगह पे हमने, आपने एक एग्जांपल दिया था कहीं पर var लेके मतलब स्कोप ब्लॉक के अंदर वो दिखा रहा था वैल्यू, और ब्लॉक के बाहर फिर वो दिखा नहीं रहा था वैल्यू। 5, ठीक है, ये देखो, ये मैंने पहले डिफाइन कर दिया है, मतलब यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ बट मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया उसको। तो ये इंटरप्रेटेड कैसे होगा? ये जो वेर है ये ऊपर जाएगा। ओके, ये मतलब होइस्टिंग हो रहा है यहाँ पे, सो दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग प्रिंटेड, इट इज नॉट थ्रोइंग द एरर। ओके, सिंपल। ओके, होस्टिंग में देख लिया। हाँ, वी आर गोइंग टू सी द नल अनडिफाइंड। ओके, सो देखो, नल अनडिफाइंड का ऐसे एग्जांपल, मतलब ये तुमको बहुत बार यूज करना पड़ेगा, तुमको ऑरा में भी ऐसे यूज करना पड़ेगा ये। ओके, ऑरा में भी यूज किया होगा। ज्यादातर लोग ऑरा में बस एक ही वेरिएबल यूज करते हैं, वेर वेर वेर। ओके, बट अवॉइड वेर, इंस्टेड ऑफ दैट यूज लेट। ओके, इट इज सेफ। ओके, सो ये भी एक अच्छा एग्जांपल नहीं दिख रहा है मुझे, लेट मी चेक। Yeah, this we can use. Okay, so now here, अब देखो नल, व्हाट इज नल? ओके, नल को क्या बोल सकते हो तुम? एक तो एक वेरिएबल को असाइन भी कर सकते हो, और इसको एम्प्टी ट्रीट करते हैं जनरल लोग। ओके, नॉन एग्जिस्टिंग वैल्यू मींस कोई भी वैल्यू हमने उसको असाइन नहीं किया, सिंपल, तो वो नल होता है। ठीक है, सिंपल। अब एग्जांपल है, बेसिकली लेट वेरिएबल लिया है, उसको नल असाइन कर दिया, प्रिंट करूंगा तो नल, बिकॉज मैंने मैनुअली नल असाइन किया उसको, तो बाय डिफॉल्ट कोई भी वैल्यू उसके अंदर नहीं है। Then what is undefined? Undefined most typically means a variable has been declared but not defined. Undefined means what? कि b तुमने डिक्लेयर तो कर दिया है बट कोई वैल्यू को तुमने उसे असाइन नहीं किया, यू हैवंट डिफाइंड एनीथिंग इनसाइड दैट, सो दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू प्रिंट यू अ undefined. Okay, simple. You can also explicitly set a variable to undefined. अब let's say तुमको एक एक वेरिएबल है, उसमें कोई तो वैल्यू एडिट थी, लेट्स से सी में कोई तो वैल्यू मैंने एंटर की थी पहले ही, लेट्स से कोई नेम दे दिया, और स्टिल तुमको उसको अनडिफाइंड बनाना है बाद में, तो यू कैन रीअसाइन अनडिफाइंड टू एनी वेरिएबल, इट इज अलाउड इन जावास्क्रिप्ट। ओके, सिंपल, सेम नल के लिए भी है, सेम अनडिफाइंड के लिए भी है। ओके, अब यहाँ पे देखो, when looking up non-existent property in an object you will receive undefined. लेट्स से हम ऑब्जेक्ट को ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब लेट्स से मैं यहाँ पे जाता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट में, कंसोल में गया मैं। ठीक है, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, तो ऑब्जेक्ट हम लोग जावास्क्रिप्ट में ऐसे डिफाइन करते हैं।
अगर तुम एपेक्स में जाओगे, लेट से अकाउंट है तुम्हारा, तुम कैसे डिफाइन करते हो ऑब्जेक्ट को? अकाउंट ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू अकाउंट। ओके, दिस वे यू डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट इन योर एपेक्स। ओके, तो जावास्क्रिप्ट में तुम अकाउंट कैसे डिफाइन करोगे? ऐसे, इसके अंदर तुमको प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। अब देखो इसमें कैसे करते हो तुम एपेक्स में, अगर अकाउंट एंड नेम दे दो कुछ तो, ठीक है, एसीसी डेमो, ऐसे तुम प्रॉपर्टी को देते हो नेम और बाद में इंसर्ट करते हो अकाउंट ऑब्जेक्ट, राइट? ऐसे तुम इसमें करते हो एपेक्स में। बट जावास्क्रिप्ट में वही चीज करनी होगी तो तुम कैसे करोगे? लाइक दिस। ओके, वेर अकाउंट इक्वल टू दिस, इसमें प्रॉपर्टी है एक नेम, की वैल्यू पेयर में तुमको डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, अकाउंट डेमो, लाइक दिस यू हैव डिक्लेयर्ड वन ऑब्जेक्ट। अब मैं ऑब्जेक्ट को एक्सेस करूंगा, मुझे एक्सेस क्या करना है? मुझे नेम एक्सेस करना है। लेट्स से नेम, इट इज गोइंग टू गिव यू नेम। अब लेट्स से मुझे आईडी एक्सेस करना है, वो कैसे करोगे तुम? प्रॉपर्टी कैसे एक्सेस करोगे ऑब्जेक्ट की? डॉट आईडी। मैं प्रिंट कर रहा हूं, मुझे क्या मिल रहा है? अनडिफाइंड। व्हाई आई एम गेटिंग अनडिफाइंड हियर? बिकॉज आई हैवंट डिफाइंड एनी आईडी इन माय ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग मी अनडिफाइंड, व्हिच इज लाइक दिस। ओके, बस सर यहाँ पे डिक्लेयर भी तो नहीं किया है आईडी को। कहां पे? हाँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं कि मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया है, सर दैट्स व्हाई इट इज शोइंग मी अनडिफाइंड। आपने बोला जब हम डिक्लेयर करते हैं और वैल्यू असाइन नहीं करते तब वो वैल्यू अनडिफाइंड बोलेगा। इट इज ऑब्जेक्ट, और वो जो मैंने पहले बताया वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है? ऑब्जेक्ट के केस में डिफरेंट होता है और प्रिमिटिव डेटा टाइप के केस में डिफरेंट होता है, ठीक है? वहां पे तुमको ऑब्जेक्ट के अंदर हर एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? अब जैसे अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तुम, राइट? सीधे सीधे तुमने अकाउंट बना दिया और बाद में तुम नेम या जो भी जो उसका फील्ड है वो एक्सेस करते हो। अब तुम हर एक नेम फील्ड के लिए उसको वापस ऐसे थोड़ी डिक्लेयर करोगे कि नेम है तो नेम इक्वल टू न्यू नेम, ऐसा नहीं करते ना। सिमिलरली ऑब्जेक्ट को तुम करली ब्रेसेस के अंदर ही प्रॉपर्टी डिफाइन करते हो, ठीक है? अब लेट से मुझे एक नई प्रॉपर्टी ऐड करनी इस ऑब्जेक्ट में, तो वो भी तुम ऑब्जेक्ट मतलब ऐड कर सकते हो। जैसे हमने असाइन किया था वेरिएबल को, राइट? जैसे सिटी पुणे था तो फिर हमने मुंबई किया, तो इसको ऑब्जेक्ट के अंदर तुम कैसे असाइन कर सकते हो? ऑब्जेक्ट डॉट आईडी इक्वल टू समथिंग, उसको आईडी असाइन कर दिया, ठीक है? अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूंगा, ठीक है, अब नीचे देखो ऑब्जेक्ट में मेरे पास दो वैल्यू ऐड हो गई, नेम और आईडी। और अगर अब मैं आईडी एक्सेस करूंगा तो मुझे आईडी की वैल्यू मिल जाएगी, यू कैन सी, बिकॉज अभी हमने आईडी वैल्यू उसमें ऐड कर दिया ऑब्जेक्ट में, इसलिए वो एक्सेसिबल है, सिंपल, ठीक है? सो ये हो गया नल एंड अनडिफाइंड। उसके बाद सिमिलरिटी क्या है नल और अनडिफाइंड में? ओके, सो अब देखो, बोथ नल एंड अनडिफाइंड आर 2 ऑफ द 6 फॉल्सिव वैल्यूज। मतलब ये वैल्यूज, मतलब फॉल्स वैल्यू कैसे ट्रीट करते हो तुम जावास्क्रिप्ट में? ओके, मतलब जैसे चेकबॉक्स होता है, अनचेक रहता है मतलब वो फॉल्स होता है, जीरो को तुम लोग फॉल्स ट्रीट करते हो, एम्प्टी मतलब फॉल्स। ओके, सो whenever you check any variables inside this what javascript, okay, तो तुम्हारे पास ये 6 टाइप ऑफ वेज है टू चेक whether the value is valid or not. Okay, so you can use false, you can use zero, you can use empty string, you can use null, undefined, not a number. So these value indicate nothing but false, simple false. जैसे सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स, तो ये 6 का मतलब ही फॉल्स है। ओके, डिफरेंट वेज में इसको फॉल्स ही बोलते हैं, ठीक है? अब इसका डेमो तुमको कैसे दिखा सकता हूं मैं कि लेट्स से कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, चेक करता हूं मैं, अगर एग्जांपल होगा तो काउंट, ठीक है? मैंने एक फंक्शन लेट्स वन डिफाइन वन फंक्शन डिस्प्ले अकाउंट। ओके, मैंने इसमें क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया एसीसी, ब्लैंक दिखाया, ठीक है? फिर मैंने क्या किया, इफ एसीसी, यहाँ पे मैंने क्या किया, कंसोल डॉट ऐड किया, ठीक है? सिंपल, एसीसी को प्रिंट किया मैंने यहाँ पे, एसीसी, ठीक है? अब मैं प्रिंट करूं, कॉल करूंगा इस मेथड को, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? Can anyone answer? null. Null. Okay, 1 is null, ठीक है? तो देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है? डिस्प्ले एसीसी, ठीक है? क्या मिला मुझे?
ऑब्जेक्ट मिला, ठीक है। तो अगर तुम एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर करते हो ना, तो ये एज ए ट्रू ट्रीट करता है उसको, ठीक है, एज ए ट्रू। तो यहाँ पे तुम देखोगे कहीं पे भी तुमको ऑब्जेक्ट नहीं मिला, ये ऑब्जेक्ट कहीं पे भी फॉल्स में डिफाइन नहीं है। अब लेट से एक एक करके ये वैल्यूज चेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेट से ये बहुत सारे वैल्यू डिफाइन करता हूँ यहाँ पे। अरे टू, अब ये ACC1 है, ठीक है, तो ये तो प्रिंट होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसको मैंने क्या किया, फॉल्स, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने क्या किया, नल, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, लेट ACC5 इक्वल टू ओके। अब ACC5 को क्या किया मैंने, अब एम्प्टी स्ट्रिंग देता हूँ, ठीक है। तो यू कैन सी आई हैव डिफाइंड 5 डिफरेंट वेरिएबल एंड लेट्स प्रिंट एवरी वेरिएबल, ओके। तो अब ये 1, ठीक है, ये 1 को प्रिंट किया, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। अब मैंने क्या किया, शिफ्ट एंटर दिस, अब इसको मैं 2 कर रहा हूँ। ये ध्यान से देखो क्योंकि ये तुमको बहुत हेल्प करेगा LWC लर्निंग के टाइम पे, ठीक है। अब और 2 बचे हैं, दैट इज 4 एंड 5, ये 4, ठीक है। अब 5th, ये 5th, ठीक है। अब मैंने इसको कॉल किया तो क्या डिस्प्ले होगा बताओ, मतलब लेट से मैं यहाँ पे ये लॉग प्रिंट हो गया, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले होना चाहिए ACC1 में, ये वैल्यू असाइन किया मैंने, ऑब्जेक्ट, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट, ठीक है। ACC2 गैस तो करो, गैस कर सकते हो। तो फॉल्स ही होगा प्रिंट। यहीं पे सब लोग गलत हो जाएंगे। पहली बात, अगर मैं इसको कॉल करूंगा, ठीक है, डिस्प्ले account2, यहाँ पे बस एक ही लॉग प्रिंट होगा, वो है फर्स्ट वन, बाकी का एक भी लॉग प्रिंट नहीं होगा। एंटर, वाई, बिकॉज दैट, ओके, ऐसा क्यों है कि एक ही प्रिंट हुआ बाकी क्यों नहीं प्रिंट हुए, बिकॉज ये सारी की सारी वैल्यू एज अ फॉल्स स्टेट होती है, ठीक है। तो मैंने इटसेल्फ यहाँ पे फॉल्स दिया है, तो ये क्या चेक करता है, जब ट्रू होगा तभी अंदर आएगा ना। इफ कंडीशन क्या होती है कि whenever your expression is true then only it is going to come inside that control, right, that block। और इफ कंडीशन के बाहर लिखे तो वहां पे फॉल्स ही प्रिंट करेगा ना। ओके, तो प्रिंट करेगा ना तब। हाँ, तो बाहर, मैंने ये अंदर का पूछा है ना, इफ के अंदर, राइट। हाँ हाँ हाँ, तो वही मुझे बताना था कि यहाँ पे मैंने फॉल्स असाइन किया है, तो तुमको जावास्क्रिप्ट में ऐसा चेक करने की जरूरत नहीं है कि account2 इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स है तब अंदर जाओ, या इक्वल टू ट्रू। तुम डायरेक्टली अगर वेरिएबल को ऐसे डिफाइन करते हो ना, तो ऑटोमेटिक चेक करता है कि वो ट्रू है कि नहीं। तो यहाँ पे फॉल्स है इसलिए अंदर नहीं गया। अब सेकेंड वन इज नल, ठीक है, नल वैल्यू है, उसको भी ये फॉल्स स्टेट करता है, सो दैट्स व्हाई ये भी प्रिंट नहीं हुआ। उसके बाद अनडिफाइंड, अनडिफाइंड को भी ये फॉल्स स्टेट करता है, इसलिए यहाँ पे नहीं आया। उसके बाद एम्प्टी स्ट्रिंग, ओके, तो उसको भी ये फॉल्स स्टेट करता है, तो इसीलिए एक भी लॉग प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। ये शेयर कर देता हूँ मैं ग्रुप पे, इंपॉर्टेंट है, ये शेयर कर देता हूँ। जो भी मैं चैट पे शेयर करता हूँ ना, बाद में क्लास एंड होने के बाद मुझे एक बार रिमाइंडर दे दिया करो, ठीक है, तो मैं तुमको रीशेयर कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। तो ऐसा है, तो इसमें हमने बस ये वाला नहीं देखा है, जीरो वाला जीरो भी कर सकते हो, अगर यहाँ पे ACC इक्वल टू 0 कर दोगे तो वो भी नहीं प्रिंट होगा, और उसके बाद नॉट अ नंबर वाला, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ तक, अभी बस जस्ट 1 मिनट मोर, ओके। ऑल्सो इन जावास्क्रिप्ट 6 प्रिमिटिव टाइप्स वैल्यूज है हमारे पास, ओके। बुलियन को तुम डिक्लेयर कर सकते हो, ओके, जैसे हमारा स्ट्रिंग है, डेसिमल है, वैसे बुलियन है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, वैसे स्ट्रिंग भी है हमारे पास, ठीक है, नंबर भी है। बट व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ var lat
const that you can assign boolean to any var lat const, you can assign any string to that. Okay, automatic वो formatted कर लेता है by default. Okay, you don't need to worry about it. So ये 6 primitive data types हैं हमारे पास. जनरली हम लोग ये 4 ही यूज करते हैं, सिंबल तो यूज ही नहीं करते जनरली, रेयरली यूज करते हैं उसको. ठीक है, अब तुमको किसी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करना है तो तुम कैसे चेक कर सकते हो? सो देयर इज वन ऑपरेटर दैट इज टाइप ऑफ प्रॉपर्टी एंड चेक द वेरिएबल. यू कैन सी इट इज नल. तो नल इज अ ऑब्जेक्ट. ठीक है, बी क्या है, तुमने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की, इट्स मींस अनडिफाइंड, तो सिंपली वो अनडिफाइंड प्रिंट करेगा. सर ये नल इज ऑब्जेक्ट मतलब नल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जैसे ट्रीट करते हैं इसको. ऑब्जेक्ट मतलब जैसे अभी हमने अकाउंट का किया था ना, यहाँ पे है कि नहीं पता नहीं, ये ऐसा ट्रीट होता है वो ऑब्जेक्ट 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 ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब जैसे अकाउंट है तुम्हारा, अकाउंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट, तो वैसे ही नल को भी एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं जावास्क्रिप्ट. ओके, नल इज अ ऑब्जेक्ट. ओके, जैसे तुम्हारा एपेक्स है, एपेक्स में तुम्हारा सुपर क्लास कौन सा है सबका? अकाउंट के ऊपर सबसे एक पेरेंट है ना, पेरेंट ऑब्जेक्ट है, रहता है ऊपर एक एस ऑब्जेक्ट. ओके, तो एस ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? एक ऑब्जेक्ट है, मतलब सब ऑब्जेक्ट का पेरेंट ऑब्जेक्ट. तो वैसे एक नल एक टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, सिंपली ऑब्जेक्ट के जैसे ट्रीट करो इसको, सिंपल. ओके, और ये स्टिक चेक है. ओके, तो ये मैं दोनों की दोनों लिंक तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ. प्लीज गो थ्रू दिस, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करो. ये बेसिक्स है. अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो गए ना तो तुमको LWC में मतलब इजी होगा, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी होगा. What is the link here? Let me refresh this. Okay, chat. Okay, go through these links, practice this. Okay, or tomorrow we are going to cover this remaining topics, that is arrow functions, spread operator. ये बहुत important है. Okay, so don't miss tomorrow's class. Okay, तो अभी हमने just basic से शुरुआत की है. ठीक है, let me